गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कोलेजियम सिस्टम। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है एक लेटर लिखी है और उसमें कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में के कोलिजियम में और हाई कोर्ट के कोलिजियम्स के लिए स्टेट एक रिप्रेजेंटेटिव को होना जो है वो एक आप कंसिडर करो। ठीक है, तो ये हुआ क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है जजिस के अपॉइंटमेंट का। लेकिन जब गवर्नमेंट एनजैक लेकर आई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो बनाने को कहा कि जिससे जो है कोलिजियम सिस्टम के साथ मिलकर जो है जजिस की अपॉइंटमेंट होगी। तो उसी से रिलेटेड जो है लॉ मिनिस्टर ने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट की जजिस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट की जो है जजिस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होना जो है वो सही रहेगा। तो ये बेसिकली सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी बनाने की बात की जा रही है। हाई कोर्ट के जजेस की अगर अपॉइंटमेंट होगी तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो है वो नॉमिनीज़ जो है वो उसमें शामिल होंगे उस सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटीज़ में। अगर सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की जो है शॉर्ट लिस्टिंग की बात होगी तो उस कमेटी में सेंटर के नॉमिनीज़ जो है वो इंक्लूड किए जाने चाहिए, ऐसा लॉ मिनिस्ट्री ने बोला है। लेकिन ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन फिर भी जो है वो कोलिजियम ही लेगा। बट ये जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी होगी या इवैल्यूएशन कमेटी होगी, ये बेसिकली रिकमेंडेशन देगी कोलिजियम सिस्टम को कि कौन से जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो आपको पता है कि कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कंसल्टेशन करते हैं और वो रिटर्न में देते हैं उनको कि जिनकी अपॉइंटमेंट किन जजेस की होनी चाहिए। उसके बेसिस पर जो है जो रिकमेंडेशन होती है वो यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेजी जाती है। लॉ मिनिस्टर आगे जो है प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं और प्राइम मिनिस्टर आगे प्रेसिडेंट को भेजते हैं और उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जज हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी तो होते हैं ना जिसमें कि एक लॉयर को जो है वो एलिवेट करके जो है जज बनाया जा रहा होता है, जो आपका डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का कंसेप्ट है। तो उस केस में क्या होता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंक्वायरी कराना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर जो है लॉयर की एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंक्वायरी कराती हैं और उसके बाद ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस जज को बनाया जाता है। अब कोलिजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होगी। तो उसमें जो है प्रोसीजर तो नहीं दिया गया, बट बोला गया है कि जो है प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कंसल्ट करके जो भी रिस्पेक्टिव जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। अब आर्टिकल 124 को इंटरप्रेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वेज में किया। तो आपको याद होगा फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, इसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन हुई। तो फाइनली तो जो थर्ड जजेस केस था उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस की जो है रिटर्न में जो है कंसल्टेशन लेंगे और उसके बाद ही जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देंगे, रादर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देंगे कि कौन से जज को अपॉइंट किया जाना चाहिए। अब उसी के बाद जो है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर सामने आ गया है। तो ये बेसिकली ऑफिशियल प्लेबुक है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जुडिशरी ने मिलकर जो है इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को बनाया है, जिससे कि कॉलेजियम सिस्टम को जो है हम गवर्न कर पाएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड। तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल बना के दे रहा है कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम वर्क करेगा। तो इसको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को कब लाया गया? जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक जो है उसको जो है स्ट्रक डाउन किया, तो तब उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर लेके आओ और हम जो है वो कॉलेजियम सिस्टम उसके हिसाब से चलाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ने जो है अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं, वो कोई कंसेंसस नहीं लेकर आ पाए हैं इस प्रोटोकॉल से रिलेटेड, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड, क्योंकि उसमें एक नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज है जिसमें कहा गया है कि कोई भी अपॉइंटमेंट अगर जो है गवर्नमेंट अगर कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से, तो उसमें जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है थोड़ी डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर अभी तक जो है प्रॉपरली एग्री नहीं किया गया है गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। ये भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ग्रांट ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल है, अगर वो मिल भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता जब चार्जशीट फाइल की जा रही है तो। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट बेल को हम स्टेचुटरी बेल भी कहते हैं। बेसिकली एक राइट टू बेल है एक हर सिटीज़न के पास। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है तो ऐसा तो नहीं ना कि आप किसी भी पर्सन को आप इनडेफिनेटली तब तक पुलिस में की कस्टडी में रखे रहोगे। तो बेसिकली इसीलिए सीआरपीसी कहता है सेक्शन 167 के अंडर कि उस पर्सन को जो है 15 दिन के बाद जो है 15 दिन की कस्टडी के बाद जो है उसको उस पर्सन के पास अधिकार हो जाता है कि वो बेल ले सकता है।
ठीक है। और जो है मैक्सिमम टाइम लिमिट्स जो है जुडिशियल कस्टडी की भी बताई हुई है कि 90 डेज़, अगर कोई केस ऐसा है जिसमें कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट का जो है वो सज़ा होनी है। अगर कोई नॉर्मल ऑफेंस है तो 60 डेज़ तक मैक्सिमम जो है जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। लेकिन नारकोटिक्स से रिलेटेड केसेस में 180 डेज़ तक भी रखा जा सकता है। अगर वो क्रॉस हो रहा है तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग रहा है, तो उस पर्सन को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इंडेफिनिटली तो रख नहीं सकते आप किसी को भी, ठीक है, किसी भी अक्यूज को, जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बेसिकली ये राइट है, एक फंडामेंटल राइट है रादर। इसको फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो ये आपका 90 डेज, 60 डेज या 100 डेज का पीरियड है, इसमें पुलिस और जुडिशियल कस्टडी दोनों के दिनों को ऐड किया जाता है और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कितने दिनों तक एक अक्यूज को कस्टडी में रखा गया है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब जब भी ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उस अक्यूज को जो है स्टेचुटरी बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको ऑटोमेटिकली ही बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है, ऑटोमेटिक बेल नहीं मिलती है। उस पर्सन को जो है वो एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। अब डिफ़ॉल्ट बेल जो है इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बना दिया है इसको सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि जो ये सेक्शन 167 है सीआरपीसी का, ये एक फंडामेंटल राइट है, ये सिर्फ एक स्टेचुटरी राइट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं याकुत सिटी। ये आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर जो है याकुत सिटी के वो -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। तो ये जगह कहाँ पर पड़ती है? रशिया के याकुत जो है सिटी आपकी साइबेरिया में पड़ती है और ये आपके 5000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मॉस्को है। साखा रिपब्लिक ऑफ रशिया में ये एरिया पड़ता है। 450 किलोमीटर साउथ है आर्कटिक सर्कल से। इसको वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी भी कहा जाता है। इसका जो ग्राउंड है वो कम्प्लीटली फ्रोजन है, इसलिए इसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? जहाँ पर सॉइल या रॉक्स या सैंड जो है वो पूरे साल जो है वो जमे रहते हैं, उसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं उस रीजन को। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मयान सिविलाइजेशन या मायन सिविलाइजेशन। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो है एक मयान टाउन का जो है वो रुइंस मिले हैं हमें रेन फॉरेस्ट ऑफ नदन ग्वाटेमाला। तो ये आपके जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको बताया। तो इसको देखा कैसे गया, इसको कैसे ऑब्जर्व किया गया रिसर्चर्स ने इसको? तो लीडार टेक्निक का यूज़ किया गया, जिसमें कि एक लेज़र छोड़ी जाती है और उसके बेसिस पर जब जिस तरफ से वो रिफ्रैक्ट होती है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि वहाँ वो कितने साल पुराना है, या फिर उसका जो है एज उस पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट की एज डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो मयान सिविलाइजेशन जो है वो मैसो अमेरिका, जो आपका इस टाइम पर सदर्न मैक्सिको, ग्वाटेमाला, नदर्न बेलीज या वेस्टर्न हॉन्डुरस का रीजन है, वहाँ पर ये जो है मयान सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो ये जो मयान लोग थे ये बहुत स्किल्ड फार्मर्स थे, वीवर्स थे, पॉटर्स थे। तो इनके जो है बहुत ही डेवलप्ड इनकी एस्ट्रोनॉमी थी, कैलेंड्रिकल सिस्टम था, हीरोग्लिफिक राइटिंग थी। तो उस समय ये बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी। यूकाटन पेनिनसुला में ये एग्जिस्ट करती थी। करंटली जो यूकाटन पेनिनसुला है मैक्सिको के साउथ ईस्टर्न जो है एरिया में पड़ता है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को सेपरेट करता है। तो मैसो अमेरिका कौन सा रीजन हुआ? जो आपका जोग्राफिकल एरिया है सेंट्रल मैक्सिको से लेकर जो है सेंट्रल अमेरिका तक का रीजन, उसको हम मैसो अमेरिका रीजन कह सकते हैं। लीडार टेक्निक में यही होता है, लाइट को एक लेज़र की तरह जो है वो अर्थ पे जो है वो यूज़ किया जाता है, डाला जाता है और उसके बेसिस पर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कि कितना डिस्टेंस जो है आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लैक बॉक्स। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो दो आपके ब्लैक बॉक्सेस हैं, जो येती एयरलाइंस जो फ्लाइट क्रैश हुई है नेपाल में, दोनों मिल चुके हैं और उसको फ्रांस भेजा गया है ब्लैक बॉक्स को स्टडी करने के लिए, और उससे पता लगेगा कि किस वजह से जो है वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो बेसिकली ये ब्लैक बॉक्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपकी परफॉर्मेंस और कंडीशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट जो है उसको रिकॉर्ड करता रहता है। इसमें दो डिवाइसेस ऐसे लगे होते हैं जिसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। पहला है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में तो बहुत सारे जो है वेरिएबल्स की कितने ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा है विमान, क्या स्पीड है, किस
किस तरह की उसकी एक्सेलरेशन है, क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। तो बेसिकली उसके बेसिस पर क्या होता है कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो आपको पता लग जाता है कि उसका जो लास्ट उसकी स्पीड या जो भी उसकी इंटरनल एनवायरमेंट कंडीशंस थी वो किस तरह की थी, ठीक है। ऐसे ही होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये जो भी वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन क्रू मेंबर्स हो रही होती है उसको रिकॉर्ड करता रहता है। तो जब प्लेन क्रैश होता है और उसको ये ब्लैक बॉक्स मिलता है तो जो लास्ट कम्युनिकेशन जो आपस में क्रू मेंबर्स कर रहे थे उससे उससे पता लग जाता है कि क्या सिचुएशन आई थी और जो है प्लेन कैसे क्रैश हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल फंड में जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उनकी कलेक्शन 31% जो है वो बढ़ चुकी है 2022 में। तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होते हैं? ये इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जो है फिक्स्ड इंटरवल्स पे या फिर वंस अ मंथ लगा लो या फिर इवन लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आपके रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं ना, वैसे ही आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्मॉल सम्स ऑफ मनी ऑन अ मंथली बेसिस कर सकते हो और जो है उससे आप रिटर्न्स कमा सकते हो। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन आता है कि इन्वेस्टर के अंदर कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है इसका, जब मर्जी आप इसको ओपन कर सकते हो और जब मर्जी आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। फुल या पार्शियल विड्रॉल दोनों ही पॉसिबल होता है, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है उस पर्टिकुलर एसआईपी की, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का ही एक तरह से फॉर्म है ये। तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसा ट्रस्ट है जो इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है और एक कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है उनका, और वो उन पर्टिकुलर कंपनीज़ में या इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और जो भी उससे रिटर्न आता है उससे अपनी थोड़ी एक्सपेंसेस काट के या अपनी कमीशन काट के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शुक्रयान 1, साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एडवाइज़र जो हैं इसरो के, जो कि स्पेस साइंस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट से उनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है शुक्रयान 1 मिशन के लिए, तो इसलिए उसको 2031 तक के आसपास जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बेसिकली ये विनस पर जाने वाला इंडिया का मिशन है और इसमें हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो है वो भेजा जाने वाला है। जियोलॉजिकल और वॉल्केनिक एक्टिविटी जो वीनस पर हो रही है उसको स्टडी करने के लिए ये प्रोग्राम या फिर मिशन भेजा जाने वाला है। तो हर 19 महीने में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जब अर्थ से जो है वीनस को लॉन्च किया जा सक के पास जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है। अब वीनस के बारे में भी देख लेते हैं। तो वीनस जो है उसको हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। बहुत ही स्लो ये रोटेट होता है। तो आप कह सकते हो कि 243 अर्थ के डेज़ में इसका एक दिन होता है, ठीक है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, इवन मरकरी से भी ज़्यादा जो है ये हॉट है ये प्लैनेट, बिकॉज इनका जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना थिक है कि ग्रीन हाउस की गैस का इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ये हीट को ट्रैप करके रखता है। अनलाइक ऑल अदर प्लैनेट्स, जो वीनस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब उल्टा मूव करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वरुण एक्सरसाइज 2023। तो ये आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 21st एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण जो है वो कमेंस हो चुकी है वेस्टर्न सी बोर्ड पे। ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में जो 1993 में शुरू हुई। 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया और ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटजिक बायलैटरल पार्टनरशिप को दिखाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जीएसटी अथॉरिटीज़ ने देखा है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का मिसयूज़ कर रहे हैं। खासकर जो एपरल, ड्रग्स या लेदर के जो सेक्टर में काम कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स, वो इलीगली इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये स्कीम है क्या? तो इसमें कस्टम ड्यूटी जो भी कोई एक्सपोर्टर जो है वो पे करता है इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी उन्होंने गुड्स इम्पोर्ट किए होते हैं अपने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका उनको जो है वो रिफ़ंड मिल जाता है। 4 साल तक वो रिफ़ंड को क्लेम किया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि जो कुछ एपरल, ड्रग्स या लेदर की इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्सपोर्टर्स हैं वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं और अलग अलग राउट से जो है वो रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is collegium system. This topic is important for your polity section. So recently, Union Law Minister has written to the Chief Justice of India to suggest that a nominee of the Union government must be there in Supreme Court collegium, and also a state representative should be must be there in case of High Court collegiums. So the suggestion given by Law Ministry is that in case of appointment of High Court judges, the search and selection or the search and evaluation committee should consist of central as well as state government nominees. For shortlisting of judges of Supreme Court and Chief Justice of High Court, the committee should include a nominee of the central government. But of course, this would just be a committee. The final decision would still vest with the collegium only. So, what is this collegium system? So, CGI and four senior most judges of the Supreme Court, they come together and they make recommendations for the appointment of judges to the apex court and the high courts. So SC judge appointment basically happens when the collegium system recommends a candidate to the Union Law Minister. Then the Union Law Minister presents this recommendation to the Prime Minister. The Prime Minister in turn um, uh, uh, gives advice to the President for the matter in the matter of appointment. So, what is the role of executive? Of course, since the collegium system has emerged, the government has a only limited role, especially when a lawyer has to be appointed as a judge. Then the government conducts an intelligence bureau based inquiry on that lawyer before appointing him or her as a judge. Okay, otherwise the role of the government is very limited. The collegium system's preponderance remains. That's a very big conflict between the central government and the judiciary as well. Okay, so how did this collegium system emerge? So Article 124 of the Constitution deals with the appointment of judges of Supreme Court, and under this article, the Supreme Court has interpreted this article in a very different way. So from first judge's case to second judge's case, third judge's case has in 1998 until this case, the new understanding is that the Chief Justice of India would consult four senior most judges of Supreme Court, and the advice of these judges would be in writing, and whatever the recommendation these judges would make, or whatever this collegium system would recommend, the government would have to appoint that. Of course, there is a condition that for once the government can send back the recommendation, but once the collegium system recommends the same judge once again, then the president or the government would have no other option but to appoint that particular judge. Then what is the role of this memorandum of procedure? So this is basically an official playbook which has been agreed between the government of India and the judiciary, and this is basically a protocol that would govern the collegium system. Then why did it emerge? So you know that in October 2015, the Supreme Court struck down this National Judicial Appointments Commission, which sought executive involvement in the procedure of appointment of judges. But then it also directed the government that they should finalize an existing memorandum of procedure for the appointment of judge, so that they can supplement the wisdom of Supreme Court collegium. But the Supreme Court and government are yet to reach a consensus on the on a revised memorandum of procedure, because there is a clause of national security. The government says that in case an appointment is being done and which hampers the national security, then of course that appointment should be thwarted. Okay, but this the government is saying that this is not yet finalized, and that's why MOP is being currently negotiated between the executive and judiciary. So the next topic is default bail. This topic is important for your polity section also. Recently, Supreme Court has said that even if we grant default bail, but it should not be an absolute bar that Supreme Court can also cancel it if the charge sheet has been filed. So what it means is that even if you get a statutory bail, it does not mean that the Supreme Court will be barred to cancel that bail when the charge sheet is being filed. Okay, so what is statutory bail? So basically this statutory or default bail means that when the police has failed to complete an investigation, it of course cannot incarcerate you, or it cannot imprison you indefinitely. So until the investigation is completed, you have the right to get bail, and you can stay under certain conditions in the city or the place,
uh, and you under certain conditions would be imposed upon this bail, and until the inquiry gets completed you would not have to stay in the prison. Okay, so this provision is under the section 16667 of CRPC. So a magistrate can order an accused to be detained in the custody of police or in the judicial custody. So the maximum time of these custodies can be 90 days in case the offense is punishable with death or life imprisonment or imprisonment for at least 10 years, or 60 days in case of any other offense. But in some special laws like the laws deal with narcotic drugs, the period is 180 days. So how this period is calculated? So the total of both police custody and judicial custody would be taken into account. If this period gets expired, it does not mean that police would continue to keep you in prison. If the investigation is pending, then you have the option to apply for statutory bail, that that it is not your mistake that police is not able to conduct the investigation. So you cannot be kept in the prison. So you have the right to, a fundamental right rather, that you can opt for this statutory bail. So it does not get automatically, the person does not get automatically released from the prison, but the person has to apply for this bail, and it is called the statutory bail. Okay, so Supreme Court has said that this default bail or this statutory bail is a fundamental right, so that's why it is not just a statutory right. Okay, so the next topic is Yakutsk city. This topic is important for your geography section. So temperatures in the Yakutsk city of Russia has plunged to minus 50 degrees Celsius. It is located 5,000 kilometers east of Moscow in the Sakha Republic of Russia. It is about 450 kilometers south of Arctic Circle, and it is also the world's coldest city. The ground in this city remains permanently frozen. That's why we call it permafrost. So permafrost is a combination of soil, rocks, and sand which remains frozen all year long. So the next topic is Mayan civilization. This topic is important for your art and culture section. So recently researchers have discovered the ruins of a large Mayan town which has been buried beneath the rainforest of northern Guatemala, and they have used the lidar technology to discover this town. Okay, so what is Mayan civilization? So it's one of the classical civilizations of Mesoamerica. Mesoamerica is the region which is which consists of Southern America, uh, Guatemala, northern Belize, and western Honduras. So this civilization develops its own astronomy, calendrical systems, and hieroglyphic writing. They were the skilled farmers. They were advanced. They were an advanced civilization. They were equally skilled as weavers and potters also. And this civilization was part of the Yucatan Peninsula. So it is this Yucatan Peninsula is the so this southeastern projection of Mexico, and it separates the Gulf of Mexico to the north and west, and the Caribbean Sea to the east. So what is meant by this Mesoamerica? Mesoamerica currently holds the geographical area which extends from central Mexico down through the Central America. Okay, then what is this lidar technique? So this light detection and ranging technique is used. It's a remote sensing method in which light is used in the form of a laser to measure variable distances on Earth. Okay, so the next topic is black box. This topic is important for your science and tech section. So both black boxes from the crashed Yeti Airlines flight in Nepal have been sent to France for further probe. So what is a black box? So black box consists of a cockpit voice recorder and the flight data recorder, so that we can record the performance and condition of an aircraft in flight. So flight data recorder is recording while the flight is in operation. The flight data recorder is operating many variables like what is the speed of that flight, at how much altitude it is flying, what is the pitch, and what is the environmental conditions inside. Okay, and similarly there is cockpit voice recorder which is recording all the verbal communication between crew members, so that in case of a mishappening we would have a record of what was the last conversation between the crew members. So this would of course allow us to formulate an opinion, or formulate and it would allow us to probe the reasons behind the crash.
So the next topic is mutual fund systematic investment plan. This topic is important for your economy section. So it has been observed that SIP collection has jumped to about 31% in 2022. So what is a systematic investment plan? So it is an investment methodology in which any individual saver can invest a fixed amount in any chosen scheme periodically at fixed intervals. It can be a once a month, or it can also be a lump sum investment. So it is similarly to a recurring deposit scheme of the bank, and small sums of money on monthly basis can be invested, and the returns can be earned through it. So, but what are the benefits of SIB? Of course, it brings investment discipline for the investors. Of course, there is no fixed tenure for running an SIP. You can run it for just 1 month or a few days, and full and partial withdrawal is possible even during or after the SIP tenure. Then what is a mutual fund? So mutual fund is basically the bigger fund that is managing these SIPs. So a mutual fund is basically a trust which is collecting money from a number of investors and investing that money. These mutual fund managers are investing that money in equities, bonds, etc., and earning returns from it. And these returns are earned, and after deducting their own compensation or the commission, they distribute the returns among the investors proportionately. So the next topic is Shukryan 1. This topic is important for your science and tech section. An advisor to the space science program of ISRO has said that ISRO is yet to receive any approval from the Indian government with respect to the Venus mission. So that's why it could be postponed to 2031. So it's called the Shukryan 1, which is the Venus mission. It's an orbiter mission in which high resolution synthetic aperture radar and a ground penetrating radar would be installed on Venus to study its geological and volcanic activity. The optimal launch window from Earth to Venus occur once every 19 months. So let's also see certain facts about Venus. So Venus is called the Earth's twin because they are similar in size and structure, but Venus is very hot because of its toxic atmosphere. It rotates very slowly on its axis. And Venus, unlike other planets, it spins clockwise on its axis. So the next topic is Varun Exercise 2023. This topic is important for your security section. So recently, 21st edition of bilateral naval exercise Varun 2023 has commenced between India and France. So it's a naval exercise between the two countries which started in 1993, and it was named Varun only in the year 2001. So it is has become a hallmark of India-France strategic bilateral relationship. So the next topic is duty drawback scheme. This topic is important for our economy section. So recently GST authorities have found out that exporters are misusing the government's duty drawback scheme and claiming refunds of IGST using this particular scheme. Okay, so over 100 such exporters have been found. They are mainly involved in apparel, drugs, and leathers business. So what is this scheme? Under this scheme, the exporters are provided with refund of customs duty which they have paid on unused imported goods, which they have used later on for export purposes. So these claims are generally lodged within 4 years from the dates these goods have been exported. But it has been found that these exporters are misusing it and claiming false refunds under the IGST regime. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.